Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the solution of chapter number 24 जहाँ पे हमारे पास around 20 problems है. The concept was very simple. It was based on only one method, that was char at. So लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा बिकॉज उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग दी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ओके जी, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. व्हाट इज़ द कीवर्ड फॉर फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन अ स्ट्रिंग? वो कौन सा कीवर्ड है जहाँ जिसके थ्रू आप एक स्ट्रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक कैरेक्टर को फाइंड करते हो? तो दैट्स कैर. ठीक है, ये कीवर्ड है, उसका नाम है मेथड का. ओके, सो दैट्स करेक्ट. Number one is done. Now number two. In this string, what character is at index 2? ये आपके पास string है A B C D E. इसके अंदर इंडेक्स 2 पे कौन सा कैरेक्टर है? डोंट इंक्लूड कोटेशन मार्क्स इन योर आंसर. अच्छा जी, कोट्स नहीं देने, डायरेक्ट वो कैरेक्टर बताना है जो कि इंडेक्स 2 पे है. तो 0 पे ए है, बी सी, 0 1 2. तो सी जो है वो 2 पे है, तो हमने सी इसको बता देना है. चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट. ओके, नंबर 3. टाइप द कैरेक्टर्स दैट आर इनकरेक्ट. इसमें से देखो और बताओ कि कौन से कैरेक्टर्स इसमें से गलत हैं. तो वार सी एच ए, ठीक है, वेरिएबल कोई नेम दे सकते हो. असाइनमेंट ऑपरेटर, सेंटेंस कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है. डॉट कैर एट, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम ये बता देते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने गलत लगाए. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number 4. The last character of the string is assigned to the variable. Okay. Fill in the blank using the string length to specify the index. Okay, जी. Mm-hmm. Last character. Okay. So str dot length -1. Check your answer. यार ये स्पेसेस में मैं मार खा जाता हूँ. ये स्पेस देना था. चाहिए जी, तो रिटर्न आता है इस पे. Okay, जी. Drag the pieces to form a statement that finds the first character in the string speech and assigns it to first char. First character के अंदर आपने speech का जो first character है वो assign करना है. So var first char assign speech dot character at parenthesis start index 0 parenthesis closed and semicolon to terminate this statement. Check your answer against the correct code and okay, now we can say we got it right. Okay, जी, autocomplete है. Find the 10th character in the string represented by text and assign it to the variable cha, which hasn't been declared beforehand. Okay, so आपने क्या करना है, चा के अंदर टेक्स्ट का फर्स्ट नहीं बल्कि 10th कैरेक्टर असाइन करना है जो कि डिक्लेयर नहीं हुआ, जो सी एच ए हमारा वेरिएबल है. तो वो वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें असाइन कर देते हैं टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स 10. ओके, इंडेक्स 10th कैरेक्टर डालना है, तो 10th कैरेक्टर जो होगा वो इंडेक्स 9 पे होगा. सही है जी. तो इस बात पे बहुत आपने गौर करना है कि 10th कैरेक्टर कह रहा है या इंडेक्स 10 कह रहा है. सही है जी. सो वेल डन. नंबर 7. फेल सेफ कोडिंग है. फाइंड द लास्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग represented by str and assign it to x which hasn't been declared beforehand. Okay, so var x assign str dot char at str dot length स्पेस -1 स्पेस मस्ट दिया करें यार, बड़ी गड़बड़ हो जाती है. एंड इट्स सेइंग वेल डन. Number 8. Find the first character in a string represented by str and assign it to x which hasn't been declared beforehand. Find the first character in the string. ये कर तो लिया,
var, अच्छा आप खुद से करना है, var x assign str dot char at first character in a string represented by str. First character. Find the first character. So zero index हो गया str का and assign it to x. Okay, सही है जी. Check your answer and it's saying correct. Number 9. Find the fifth character, index 4, in a string represented by input and assign it to cha, which hasn't been declared beforehand. So, var cha assign input dot character at fifth character is on index 4. So, let's check the answer and it's saying correct. Well done. Number 10. Find the last character in a string represented by a variable and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. Find the last character in a string represented by a variable. Okay, so var y assign x dot char at x dot length minus 1. इसको करो close, semicolon डाल दो, check your answer and it's saying correct. Number 11. Okay, number 11 में हमारे पास है code the first line of an if statement that tests whether the third character of a string represented by a variable is a particular character. Code the first line of an if statement. So if whether the third character of a string represented by a variable, so x dot char at third है तो second index पे होगा is a particular character equal to let's say exclamation mark, कुछ भी आप ले सकते हो, स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करें. चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट. Next up, number 12. Code a for loop that cycles through all the characters of a string represented by a variable and assigns each character to an element of an array that has been declared beforehand. Okay, so for var I assign 0, I less than array dot length I plus plus those spaces all the characters of a string represented by that cycles through all the characters of a string represented by variable. So string को एक variable represent कर रहा है to an element of an array that has been declared beforehand. To an element of an array I assign str dot char at I hope so. Check your answer and it's saying correct. Okay, number 13. We are time bounded now. 13 के लिए हमें मिले हैं 35 seconds. Find the first character, single दी है. Find the first character in a string represented by str and assign it to x, which hasn't been declared beforehand. So var x assign str dot char at first character 0 index semicolon. Check your answer and it's saying well done. 40 seconds for number 14. Find the fifth character in a string represented by input and assign it to CHA, which hasn't been declared beforehand. So var CHA assign input dot char at fifth character is at an index 4 semicolon. Check your answer. Well done. 50 seconds for number 15. Find the last character in a string represented by a variable and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. So that variable is, let's say, x or y. Assign str dot char at last character उठाना है, so str dot length minus 1 semicolon.
Check your answer. And it's saying well done. Next up, 50 seconds for number 16 as well. Quote the first line of an if statement that tests whether the third character of a string represented by a variable is a particular character. Okay, so uh, if statement that tests whether the third, okay, so str dot char at third, so index 2 dot character is equal to let's say @ आप कुछ भी चेक कर सकते हो सही है जी so character of a string represented by a variable is a particular character. Check your answer and it's saying well done. Number 17, we got 90 seconds for this one. Code a for loop that cycles through all the characters of a string represented by a variable and assigns each character to an element of an array that has been declared beforehand. अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कर लिया. So for var I assign 0, I less than str dot length. आप कोई भी नाम ले सकते हैं str की जगह, I की जगह भी कोई नाम ले सकते हैं सही है. और यहाँ पे लेट्स से वो एरे है ARR वो एरे मैंने अस्यूम किया है और उसके हर एक इंडेक्स पे 0 से स्टार्ट हो रहा है मैं डाल रहा हूँ str डॉट char at I. सो I पे जो कैरेक्टर आएगा वो एरे के I पे जाता जाएगा. Check your answer and it's saying well done. 80 seconds for number 18. Concatenate the first character of a string represented by variable with the last character of another string represented by variable and assign the combination to a variable that hasn't been declared beforehand. Concatenate the first character of a string represented by a variable with the last character of another string represented by a variable and assign the combination to a variable that hasn't been declared beforehand. So var combo assign str1 dot char at 0 concatenated with str2 dot char at first character of a string represented by a variable with the last character of another string represented by a variable. Okay, so str2 dot length -1 सही है और सेमीकोलन लगा देंगे. Check your answer and it's saying well done. Okay, now relax. Number 19, live coding exercise. Assign a string to a variable. Okay, var name, let's say John. ठीक है. Specifying the variable in the message, code an alert that displays the first character of the string. Specifying the variable in the message, code an alert that displays the first character of the string. वैसे भी रन तो करना है ना. Name dot char at first character of the string. Okay, run it. हमारे पास J आना चाहिए and J आ रहा है. So we can say we got it right. Number 20, assign a string to a variable. Okay, so var name assign hiba. ठीक है जी. और specifying the variable in the message, code an alert that displays the last character of the string. Okay, alert name dot character at name dot length -1. बहुत दफ़ा कर लिया अब ये तो. Run it and it's saying A. हिबा का last character है A. Okay, so we can say we got it right. Last पे आ गए हम और हमने करना है to specify the index. Fill in the blank using the string length to specify. Okay, last character को access करना है. So str dot length -1. ठीक हो गया. Check your answer and it's saying correct. Congratulations, we got all the exercises correct. So that's it from this video. मिलते हैं next video में. Till then, take care.